And we are now getting you details of the ruckus that broke out in the Jammu and Kashmir Assembly. Thoroughly embarrassing, as it was NC leaders who went on to speak about the restoration of Article 370 and also the statehood of Jammu and Kashmir, as they have been demanding, must be restored. Now, you saw what happened in the well of the House, where two BJP MLAs also got injured during the Assembly ruckus, and they were marshalled out. BJP leader Smriti Irani, who has slammed Jammu and Kashmir Chief Minister Omar Abdullah very strongly, demanding that Omar Abdullah must clear his position on the issue of Article 370 abrogation. There was complete chaos and a scuffle over the demands that the NC is making of not just asking for the release of political prisoners, but also the restoration of Article 370 and 35A. Republic also gets you the response of the Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir. Listen in. जो पार्टी कहती है वी आर विद द डिफरेंस, जो पार्टी कहती है वी आर वेरी डिसिप्लिन, आज उन्होंने दर्शाया कितने डिसिप्लिन में। जहां लीडर ऑफ द अपोजिशन खुद टेबल पे चढ़ जाए, चेयर पे चढ़ जाए, तो वहां बाकियों से क्या तवक्को करोगे। ये जो आज उन्होंने किया है, ये चेयर का कहीं तौहीन थी, ये उस हाउस की तौहीन थी जिस हाउस में ये आए हैं। तो लिहाजा ये क्या कहते हैं, जो ये कर रहे हैं, ये अपने आप को नीचा गिरा रहे हैं। वो लोग जो जम्मू के लोग हैं, जिन्होंने इनको चुन के किसी बेरोजगार बच्चों के रोजगार के लिए भेजा है, उन्होंने माइनिंग का रेट ठीक करने के लिए भेजा है, उन्होंने इंडस्ट्री पॉलिसी ठीक करने के लिए भेजा है, उन्होंने टूरिज्म को अपना बढ़ावा देने के लिए भेजा है, उन्होंने इनको भेजा है तो हॉस्पिटलों की कंडीशन ठीक करो उसलिए भेजा है, उन्होंने कहा हमारे स्कूल ठीक करो उसलिए भेजा है। लेकिन ये कौन से चक्रों में पड़ गए हैं? ये सिर्फ यहाँ फोटो सेशन करने के लिए आते हैं, ये लोगों की हमदर्दी करके नहीं आते। हमने जो रेजोल्यूशन दिया है वो लोगों के हित में, जो चीज़ हमने कही, जिनके लिए कही, जिस आम गरीब के लिए कही, वो समझ रहा है। दिल्ली वाले समझ रहे हैं, जिनको हमने समझाना वो समझ रहे हैं, हमने जो कहा वो करके दिखाया। अब कौन क्या कहता है, ए डैश कहाँ आई, फुल स्टॉप कहाँ आया, कॉमा कहाँ आया, ये हम मास्टर नहीं है पढ़ाने आए, हम ये दिखाने आए हैं कि जो लोगों से वादा करके आए हैं उस वादे को निभाया है, वो लोगों को करके दिखाया। उसमें हम अपने आप को खाली ये किया नहीं, इसको करवा के छोड़ेंगे। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेताओं का टैक्टिकल समर्थन दिखाता है उग्रवाद और आतंकवाद के समर्थन में। ये भारत में हर नागरिक को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद नागरिकों की मृत्यु में 80% की गिरावट हुई। यह हर हिंदुस्तानी को ज्ञात है कि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में 70% की कमी हुई। And those are the strong political reactions that have come in as the BJP has called out the NC Congress combine in Jammu and Kashmir to explain what exactly happened. Meanwhile, we put out this video on this enlarged screen to give you a sense of what transpired. You see massive chaos and the scuffle that broke out on the floor of the House in the Jammu and Kashmir Assembly, where you see how marshals were brought in. Now, primarily this was Rashid Engineer's brother who first displayed this placard, where it clearly reads that we demand the restoration of Article 370 and 35A and also the release of political prisoners. Now, this is a demand that the NC has been making ever since the abrogation of Article 370, which of course has been the biggest face-off between both sides. This banner that was displayed to restore Article 370, and soon after, loud slogans were also raised on the floor of the House. We saw how both sides entered into a scuffle, so much so that two BJP leaders who were also injured as a part of this scuffle, and the BJP has very strongly called out the NC Congress combined to explain their position on what they want as far as the future of Jammu and Kashmir is concerned when it comes to Article 370 and restoring statehood of Jammu and Kashmir, which, remember, the centre has said that will happen at a later point. But this kind of a scuffle that broke out on the floor of the House. So, primarily to show you, not only did the protests escalate, but even the resolution copy that was torn into bits. Every action that you see frame by frame of how the matter escalated